Timing is crucial when it comes to planting seeds. Here are some tips to help you get it right. 1. Know your frost dates. Find out the average last frost date in your area for spring planting and the first frost date for fall planting. This helps you plan when to start seeds indoors or directly sow them outdoors. 2. Read seed packets. Seed packets often provide guidance on when to plant based on your location. They may suggest starting indoors a certain number of weeks before the last frost date or direct seeding after the last frost. 3. Start indoors wisely. For plants that require a long growing season or are sensitive to cold, start seeds indoors several weeks before the last frost date. This allows seedlings to be ready for transplanting once the weather warms up. 4. Direct sow for hardy plants. Some seeds, like root crops, carrots, radishes, and certain herbs, basil, cilantro, are best sown directly into the ground as they don't transplant well. Wait until after the last frost date and when soil temperatures are suitable. 5. Consider soil temperature. Seeds germinate best when the soil temperature is right for them. Use a soil thermometer to monitor soil temperature and plant seeds when it's within the recommended range for each type of plant. 6. Check moisture and weather. Ensure the soil is moist but not waterlogged when planting seeds. Keep an eye on the weather forecast to avoid planting seeds just before a heavy rain or during a cold spell. 7. Succession planting. To extend your harvest, plant seeds in batches every few weeks rather than all at once. This staggered planting ensures a continuous supply of fresh produce throughout the growing season. 8. Use a gardening calendar. Keep a gardening calendar or use a gardening app to schedule planting times, record observations, and plan for future seasons based on your local climate and growing conditions. By paying attention to these timing tips, you can maximize the success of your seed planting and enjoy a bountiful garden throughout the year. एक घरेलू बाग में बीज लगाना एक इंतहाई अनोखा तजुर्बा हो सकता है। यहाँ कुछ मशवरे हैं जो कामयाबी की यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. सही बीज मुंतखब करें। अपने मौसम और मौसम के मुताबिक बीज मुंतखब करें। मकामी प्लांटिंग गाइड्स को तजावीज़ के लिए चेक करें। 2. मिट्टी की तैयारी। ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जो ऑर्गेनिक मवाद से भरपूर हो और अच्छी तरह से पानी निकाले। बेहतरीन नताइज के लिए बीज शुरू करने के मिक्स का इस्तेमाल करें। 3. बोने की गहराई। बोने की गहराई के लिए बीज पैकेट की हिदायत का पैरवी करें। आमतौर पर बीज तकरीबन अपनी साइज की 2 गन्ना गहराई पर बोने जाते हैं। 4. पानी देना। मिट्टी को मुस्तकिल तौर पर गीला रखें लेकिन पानी से भरा ना होने दें। ज़्यादा पानी देने से बीज का सड़ जाना मुमकिन है। 5. रोशनी। ज़्यादातर बीजों को जर्मने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। बीज ट्रीज को धूप में रखें। अगर तभी रोशनी काफ़ी ना हो तो ग्रू लाइट्स का इस्तेमाल करें। 6. दर्जा हरारत। अपने लगाने वाले बीजों के लिए तजवीज़ शुदा दर्जा हरारत बरकरार रखें। बहुत से बीज गर्म हालतों में बेहतरीन तरीके से जर्मिनेट होते हैं। 7. 5. Mulch. Apply mulch around plants to help retain soil moisture, suppress weeds, and regulate soil temperature. 6. Fertilize. Use organic or slow-release fertilizers to provide essential nutrients to your plants. Follow instructions carefully to avoid over-fertilizing, which can harm plants. 7. Prune and stake. Regularly prune plants to remove dead or diseased branches and improve air circulation. Stake tall or climbing plants to support them and prevent breakage. 8. Monitor for pests and diseases. Keep an eye on your plants for signs of pests or diseases. Early detection allows for prompt treatment, which can prevent widespread damage. 9. Harvest regularly.
Harvest vegetables and fruits when they are ripe to encourage continuous production. This also prevents overcrowding and competition